राइट, अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे सितंबर दिसंबर एग्जाम्स का ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, और हमारे पास एक क्वेश्चन है ओवरऑल, वो क्या है? कमेंट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द मैटर टू बी कंसीडर इन द इशू साइड एंड रिकमेंड द फाइनल रिपोर्ट कैन बी साइन। ठीक है, और इवेल्युएट, फिर सेकंड में कह रहे हैं इवेल्युएट द implications फॉर द ऑडिट रिपोर्ट इफ नो एडजस्टमेंट्स आर मेड इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओवरऑल 15 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, 1 and 2। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं जी। It is 1st July 2000 X5. You are the manager responsible for the audit of Maroon Company, a listed company। हाईलाइट कर रहा हूँ, listed कंपनी है भाई। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे की ऑडिट मैटर का मामला आएगा। फिर एंड यू आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड एज पर द ऑडिट report is due to be signed in the next principles operating activities, the publication of trade and scientific journals, the draft financial statement recognize revenue कितने का है भाई? 108 million। 2000 X4 में 102 का था। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ इस फाइव का कितना? 9.3 लास्ट ईयर। टोटल एसेट्स इस साल 150, लास्ट ईयर 149 मिलियन के थे। यू आर इन द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स। आप रिव्यू कर रहे हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पोटेंशियल इश्यूज। सबसे पहले जी हम लोग आ जाते हैं सेल ऑफ डिवीजन के ऊपर। मैरन कंपनी इज एन एडवांस स्टेज ऑफ नेगोशिएशन टू सेल इट साइंटिफिक पब्लिकेशन डिवीजन टू अ कॉम्पिटिटर। This division contributed revenue of 13 million and PBT of 1.4 million during the year. The draft sale agreement, which is due to finalized, X5 shows an agreement after कितनी है? 42 million. The division is a separate cash generating unit of the Marin company and none of the assets of the division are held under the revaluation policy. Depreciation is charged on a straight line basis over the determined useful life of assets. Finance director जो है मेरॉन कंपनी का has not made any disclosures with respect to the upcoming sale in the financial statement for the year ended X5 as he considered it to be a part of next year's accounting transactions. However, the division has been written down from its current carrying amount of 45 million to its estimated value in use of 41 million in the financial statement for the year ended 31st March X5. क्या मसला भाई? ये ट्रांजैक्शन कौन सी है? हेल्ड फॉर सेल की ट्रांजैक्शन है, पहली बात। ठीक है, तो क्या वो कंडीशंस मीट हो रही हैं भाई? एग्रीड सेलिंग प्राइस तक पहुंचने को होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर आपने इम्पेयरमेंट का रिव्यू करना है। ठीक है, वैल्यू इन यूज पे 41 का कर रहा है, सेलिंग प्राइस 42 पे हो रहा है, तो लोअर ऑफ पे जाएंगे, हम लोगों ने रिकॉर्ड करना है। होगा, चलो वो बात तो ठीक है। फिर मटीरियलिटीज आपने देखनी और इसको डिस्कस करना है, तो आइए जरा इसको डिस्कस करते हैं। और इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग क्या बात करेंगे? सबसे पहले आइए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, शुरू कर। तो सेकंड, क्या हेडिंग्स डालेंगे भाई? मेरा क्वेश्चन है 3A। ठीक है, मैटर्स आएंगे इसके अंदर फर्दर एक्शन आएंगे, एक्शन आएंगे, और ऑडिटर रिपोर्ट इम्प्लीकेशंस आएंगी। ठीक है, तो पहले बात करें तो द कंपनी is at an advanced stage of negotiations with a competitor to sell its scientific publishing
division. Currently, the finance director has not included any reference to the sale in financial statements for the year ended 31st March 2000x5. पहले तो हमने मैटर बता दिया जी एडवांस स्टेज ऑफ नेगोशिएशंस में डिविजन्स के लिए करंटली फाइनेंस डायरेक्टर ने जो है कोई भी इसका रेफरेंस वगैरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिया। आपने इतनी बात कर दी, फिर आप सिंपली क्या करोगे, मटीरियलिटी निकालेंगे। ठीक है, मटीरियलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, द रेवेन्यू ऑफ द पब्लिशिंग डिवीजन ऑफ डॉलर कितना था यार, 13 मिलियन था, represents 12% of total revenue and the profit of the division। कितना था डिवीजन का प्रॉफिट, हम लोगों ने देखा है $1.4 मिलियन, जो कि कितना है, रिप्रेजेंट्स 15.1% of profit before tax। The division is therefore carrying material to the statement of profit or loss। The assets of the division are also material as their 27.3% of company total assets। ठीक है जी, हमने ये बात कर ली। अच्छा जी, बेस्ड ऑन वर्ड, बेस्ड ऑन वैल्यू इन यूज which is recognized in financial statements as it represent। ओके, ये ठीक कर दिया मैंने, आगे आ जाए भाई। मटीरियलिटी भी निकाल दी। अब हमने हमारा एम हो गया, अब हम लोगों ने ट्रीट करनी है तो डिसकंटिन्यूड ऑप्शन एंड एसेट्स एंड फॉर सेल। तो जी IFRS 5 held for the non-current assets held for sale and discontinued operation defines discontinued operations as a component of an entity which either has been disposed of or is classified as held for sale, and IAG represents either a separate major line of business or a geographical
area of operations is part of a single coordinated plan to dispose of a separate major line of business or geographical area of operation. ठीक है जी, ये भी बात होगी कि या तो सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, geographical area सेपरेट कोऑर्डिनेटेड प्लान है operation. तो इसके अंदर IFRS की क्या रिक्वायरमेंट है? IFRS 5 requires specific disclosures in relation to assets held for sale and discontinued operations, including that the assets are recognized as current assets and the results of the discontinued operation are presented separately in the statement of profit or loss and the statement of cash flows. ठीक है, ये भी बात हो गई कि भाई अकॉर्डिंग टू IFRS 5 डिस्क्लोजर्स जो हैं रिलेटिंग टू एसेट फॉर सेल और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से देने, इंक्लूडिंग एसेट्स जो कि रिकॉग्नाइज्ड हुए एज एन एसेट करंट एसेट्स और जो रिजल्ट्स हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के, वो एक सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में आप दोगे. ये भी बात होगी. आगे बढ़ते हैं जी. अकॉर्डिंग टू दी IFRS 5 a disposal group of assets should be classified as held for sale, where management plans to sell the assets and the sale is highly probable. Conditions which indicate that sale is highly probable are management is committed to plan to sell, committed है भाई सेल के लिए management. The asset is available for immediate sale and active program to locate a buyer is initiated. The sale is highly probable within 12 months of classification as held for sale, subject to limited exceptions.
The asset is being actively marketed for sale at a sales price reasonable in relation to its fair value. Okay. The asset is being actively marketed for sale at a sale price is sale price marketed for sale at a sale price reasonable in relation to its fair value. अच्छा जी, actions required to complete the plan indicate that it is unlikely that plan will be significantly changed or withdrawn. आगे चलते हैं जी। हमने ये कंडीशन बता दी, आप जरा इसको कनेक्ट करें सिनेरियो के साथ। In respect of the scientific publishing division, management has decided to sell the division has been found. ठीक है, वो हमें मिल गया है। The advanced stage of negotiations would suggest the sale is highly probable. Okay, by sale highly probable. अच्छा जी, अब as a result important disclosures are currently missing from the financial statements. सबसे बड़ा मसला जो है which could mislead users with respect to the future revenue, profits, assets, and cash flows of the company. Failing to provide information about the sale of the division could be seen as a significant omission from the financial statements, especially given the materiality of the assets of the division to the company
assets as a whole। चलें जी, हमने ये बात भी कर ली है कि एज अ रिजल्ट इम्पोर्टेंट जो डिस्क्लोजर्स हैं करंटली मिसिंग हैं और जो कि मिसलीड कर सकते हैं यूजर्स को रिगार्डिंग द फ्यूचर रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, एसेट्स, कैश फ्लोज। और अगर आप ये इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तो ज़रा इसके फेलियर की सूरत में एक सिग्निफिकेंट ओमिशन हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जो कि मटीरियलिटी ऑफ द डिवीजन एज अ होल आपका जो है वो सही कम्युनिकेट नहीं होगा। देयर इज therefore a material misstatement as the scientific publishing division has not been classified as held for sale and its profit presented as a discontinued operation, and the necessary disclosures have not been made in financial statements। ठीक है जी। देयर इज एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है और जो कि अगर जो कि फाइनेंशियल डिवीजन को लेते हुए, ठीक है, पब्लिशिंग डिवीजन को लेते हुए जो कि क्लासिफाइड अगर इसको नहीं करा है एज एन हेल्प फॉर सेल, और जो इसके प्रॉफिट एंड डिस्पेंडिचर प्रॉफिट में उसमें नेसेसरी डिस्क्लोजर्स अगर नहीं दिया तो एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी। ठीक है, फिर इसके अंदर थोड़ा सा डिस्कशन हमारा वैल्यूएशन को लेके भी आता है। ठीक है, तो अगली हेडिंग में दे दूंगा हेल्प फॉर सेल वैल्यूएशन की। ठीक है, जो कि इम्पेयरमेंट वगैरह से रिलेटेड जो इसकी वैल्यूएशन हुई है उस पर बात करूंगा। तो IFRS 5 प्रोवाइड फर्दर guidance regarding the valuation of the assets held for sale. Prior to the classification as held for sale, the disposal group should be reviewed for impairment in accordance with IS 36, impairment of assets. This impairment review would require the asset to be held at of carrying amount and recoverable amount, where the recoverable amount is the higher of value in use or fair value less cost of disposal। ये भी हमने बता दिया कि भाई अकॉर्डिंग टू IFRS 5 फर्दर गाइडेंस चाहिए वैल्यूएशन ऑफ हेल्ड फॉर सेल के लिए। क्लासिफिकेशन से पहले हेल्ड फॉर सेल का डिस्पोजल को जो है इम्पेयरमेंट रिव्यू करना है अकॉर्डिंग टू IS 36, और उस इम्पेयरमेंट रिव्यू में जो है एसेट जो के हेल्ड हो रहा है होगा एट लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट, और रिकवरेबल अमाउंट जो है वो हायर वैल्यू ऑफ किस, क्योंकि हायर ऑफ होगा वैल्यू इन यूज या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल के। अब इस केस में the recoverable amount would be
कितना है 42 मिलियन, रिप्रेजेंटिंग द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। अच्छा जी, मैनेजमेंट हैज वैल्यूड द डिस्पोजल group based on its value in use at $41 million, which means that assets and profit are currently understated by $1 million. This represents this represents 10.7% of profit before tax. In short मैं लिख देता हूँ PBT, ठीक है। अच्छा, is material to profit for the year. तो सिंपली इस केस में रिकवरेबल अमाउंट जो है 42 मिलियन होगा, जो कि रिप्रेजेंट करता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। मैनेजमेंट ने जो वैल्यू करी है डिस्पोजल ग्रुप को वैल्यू इन यूज पे 41 मिलियन पे। इसका मतलब ये है कि एसेट और प्रॉफिट जो है वो करेक्टली अंडरस्टेट हो रहे हैं 1 मिलियन, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10.7% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि मटीरियल है प्रॉफिट फॉर द ईयर के लिए। अच्छा जी, अगली बात अगली बात इस सिनेरियो के मैंने आखिरी बात थोड़ी सी करनी है, वो मैं करता हूँ। ओके जी, फाइनली हमारा थोड़ा सा इसका रह गया। और क्या जी, आफ्टर द क्लासिफिकेशन एज held for sale, non-current assets or disposal groups are measured at the lower of carrying amount and fair value less cost, which would continue to be 42 million. Depreciation ceases to be charged when an asset is classified as held for sale, ठीक है। तो यहां तक हमारा हो गया। अब हमने क्वेश्चन के सेकंड हाफ पे जाना है, और वो सेकंड हाफ हमारा किससे रिलेटेड है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ IFRS 16 का, ठीक है। तो इसको हम लोग अब देखते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं किस पे, फर्स्ट टाइम adoption of IFRS 16 leases, किस पे, Marin company operates from leased premises and additionally hold leases for printing equipment for journals, ठीक है। These leases are material to the financial statement, and company has adopted IFRS 16 for the first time this year and has adjusted the opening balance and equity without restating comparatives as permitted by IFRS 16. There is, however, no reference in the financial statement to change in policy for the reason for making the change to accounting policies. The adjustments have been checked by the audit team and deemed appropriate. अब चलें और इस पे बात करते हैं। और क्या बात करेंगे हम लोग, सिंपली पहले तो एडिंग दे देते हैं, एडॉप्शन
of IFRS 16 and change in accounting policy. दो चीजें इसके अंदर आ रही हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी को छेड़ते हैं हम लोग। IS 8 है जनाब अकाउंटिंग पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एंड एरर्स permits a change in accounting policy where the change सबसे पहले is required by a standard or interpretation or results in the financial statements, providing reliable and more relevant information about the effects of transactions, other events or conditions on the entity financial statement, financial statements, financial position, performance और कैश फ्लोस। ये बात है, ठीक है कि भाई जो भी रिजल्ट आ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कि रिलायबल मोर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ट्रांजैक्शंस में, इवेंट्स कंडीशंस में, फाइनेंशियल पोजीशन में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, कैश फ्लो। तो यहाँ पे IS 8 आपको कहता है कि where the change in policy is due to the requirements of a new standard, then the method applying the change set out in the new standard should be followed. In this case, IFRS 16 permits a lessee to either apply IFRS 16 with full retrospective effect or alternatively not restate comparative information but recognize the cumulative effect of initially applying IFRS 16 as an effect or alternatively not restate comparative information but recognize the cumulative effect of initially applying IFRS 16 as an adjustment to opening equity
at the date of initial application. ठीक है. Therefore, the accounting treatment by Myron Company is acceptable. अच्छा जी, क्या बात करी मैंने अभी तक कि जो चेंज है अकाउंटिंग पॉलिसी में रिक्वायरमेंट्स की, नए स्टैंडर्ड की, कि जी अप्लाई करें चेंज जो कि नए स्टैंडर्ड में फॉलो करनी है. इस केस में IFRS 16 परमिट कर रहा है कि या तो अप्लाई करो IFRS 16 विद फुल रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव आने वाले वक्त से. ठीक है, या फिर आप रिस्टेट करें या फिर अल्टरनेटिवली आपको कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन रिस्टेट ना करें लेकिन रिकग्नाइज कर लें क्यूमुलेटिव अफेक्ट. ठीक है, तो इक्विटी में डेट ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन में यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैरिन कंपनी की जो है वो एक्सेप्टेबल है. आगे हम चलेंगे. और मजीद बात करेंगे. However, the lack of disclosure of the change in accounting policy is not in accordance with IAS 8 requires the following disclosures in these circumstances. ठीक है, क्या है जी, लैक ऑफ डिस्क्लोजर जो है अकाउंटिंग पॉलिसी का वो अकॉर्डेंस में नहीं है, यानी कि वो इसके मुताबिक नहीं है ये स्टेट के. ठीक है, और क्या डिस्क्लोजर्स आपने देने हैं अब हम उसके ऊपर बात करते हैं. द टाइटल ऑफ स्टैंडर्ड और इंटरप्रिटेशंस causing the change. ठीक है, टाइटल स्टैंडर्ड का इंटरप्रिटेशन जिसकी वजह से चेंज आ रही है. द नेचर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, a description of the transitional provisions, a description of provisions in transitional provisions, including those that might have an effect on future periods for the current period and each prior period presented to the extent practicable, the amount of the adjustment. यह आ गई चीज. ठीक है, कि डिस्क्रिप्शन दे दोगे ट्रांजिशनल प्रोविजंस के जिसका इफेक्ट हो सकता है फ्यूचर पीरियड्स में, करंट पीरियड के एक पीरियड जो भी प्रेजेंट कर रहे हो, प्रैक्टिकेबल एडजस्टमेंट्स आप बताओगे. और क्या बताएंगे आप? फॉर ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट line item affected and for basic and diluted earnings per share only if the entity is applying
IAS 33, ठीक है। हर बेसिक और डायलेटेड अर्निंग पर शेयर के लिए जो भी आप अगर एंटिटी अप्लाई कर गया IAS 33 अगर लिस्टेड है तो जाहिर है और ये लिस्टेड है। सो और द अमाउंट ऑफ द एडजस्टमेंट, स्पेलिंग ठीक कर लेंगे। द अमाउंट ऑफ द एडजस्टमेंट relating to periods before those presented to the extent applicable, ये भी आ गया, ठीक है। अमाउंट ऑफ द एडजस्टमेंट जो कि प्रेजेंट हो रहे हैं जिस एक्सटेंट तक भी वो प्रैक्टिसेबल है, एप्लीकेबल है, प्रैक्टिसेबल, ठीक है, ये आपके डिस्क्लोजर्स आने चाहिए। अच्छा जी, मजीद हम लोग क्या बोलेंगे जी? As these disclosures have not been made, there is an omission of disclosure which is key to understanding the changes in deriving the lease balances in the financial statements, which is likely to be material omission given that lease assets are material to the financial statements। सही है जी, ये भी आ गया। मजीद एक्शंस ऑडिटर क्या लेगा? फर्दर एक्शंस के ऊपर अब बात कर लें। The auditor or the auditor should request that management adjust the financial statements to recognize the discontinued operation and to separately disclose the assets held for sale in accordance with IFRS 5 with IFRS 5। अच्छा जी, ऑडिटर को रिक्वेस्ट करनी मैनेजमेंट के साथ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो है वो रिकग्नाइज करे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को सेपरेटली डिस्क्लोज करे हेल्ड फॉर सेल अकॉर्डिंग टू IFRS 5, ठीक है। और क्या होगा इसके अंदर, इसी के अंदर एंड टू चेंज सर एंड टू डिस्क्लोज चेंज इन किसमें भाई? अकाउंटिंग पॉलिसी for leases as required by IAS 8। अच्छा जी, मजीद हम लोग क्या बात करेंगे? इन एडिशन द क्लाइंट should be requested to amend
the carrying amount of the assets to the recoverable amount of dollar 42 million in line with IFRS 5 requirements. Additionally, client जो है request करेगा carrying amount of the assets to the recoverable amount कितना 42 million in accordance with the IFRS 5. ठीक है. और क्या हो सकता है भाई? If management still refuses to amend the financial statements, the auditor should request a written representation from management confirming their intent to proceed without amending the financial statements. And that they are aware of the potential repercussions. चलो जी, ठीक है. फिर अगर मैनेजमेंट फिर भी मना कर देती है भाई अमेंडमेंट्स करने से, तो फिर जो है ऑडिटर को क्या करना होगा? ऑडिटर को रिक्वेस्ट करना होगा रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट लेटर से, रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से कि जी वो कंफर्म कर रहे हैं कि जी उनकी इंटेंशन है कि वो प्रोसीड करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करने के अमेंड किए बगैर, और पोटेंशियल रिप्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, क्या इश्यूज हो सकते हैं, वो आपने उनको अच्छी तरह पता है. फिर नेक्स्ट हेडिंग हमारी आ जाती है ऑडिटर्स रिपोर्ट implication. If the adjustments are not made, then there is a material misstatement in the financial statements. The matters above have resulted in an understatement of assets and profits by $1 million, which is in isolation is unlikely to be pervasive as limited components of the financial statements are affected. ठीक है जी. इन आइसोलेशन जो है वो इतने परवेजिव नहीं होंगे जो कि अफेक्ट करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को. तो इसके उसमें क्या होगा जी? This would result in
This would result in a qualified opinion in which the report would state that except for the material misstatement in relation to the valuation of the assets held for sale, the financial statements are fairly stated. ठीक है, ये बात होगी कि इसके रिजल्ट में क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा जो कि रिपोर्ट कहेगी कि एक्सेप्ट फॉर द मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो कि वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एल्ड फॉर सेल की बाकी चीजें सही अच्छी। आगे बात करते हैं। However, there are also several important disclosures omitted which would be required to understand both the current financial statements, financial position of the company and its ability to generate future revenue and profits. As such, it would be a matter of judgment as to whether the lack of disclosure in conjunction with the material misstatement mentioned above have a pervasive impact on the financial statements। ये भी बात कर ली मैंने कि अगर बहुत से डिस्क्लोजर जो हैं वो अंडरस्टेटेड हैं, मतलब वो सारे डिस्क्लोजर्स नहीं दिए करंट फाइनेंशियल पोजीशन में और ये भी नहीं बता रहे कि फ्यूचर रेवेन्यू और प्रॉफिट्स पे क्या होगा। इसका एक मैटर ऑफ जजमेंट पे लैक ऑफ डिस्क्लोजर्स की वजह से आ सकता है जो कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट यहाँ पे लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी। ठीक है, और उसका परवेजिव इम्पैक्ट होगा किस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो मजीद में क्या कहूंगा कि डिपेंडिंग on the auditor's judgment on this issue, this may give rise to an adverse opinion if the auditor considered the impact of these issues this may give rise to an adverse opinion if the auditor considered the impact of these issues to result in the financial statements being wholly misleading।
depending on the opinion provided, a basis for qualified opinion, basis for a qualified or adverse opinion paragraph would be added underneath the opinion paragraph to describe and quantify the effects of misstatement. फाइनली हमारा सोल्यूशन यहाँ पे खत्म हुआ। इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर थे जो कि नहीं दिए थे, जिसकी वजह से यूजर्स को जो है करंट फाइनेंशियल पोजीशंस और कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स को समझने में, इसको जजमेंट वगैरह करने में मुश्किलात हो सकती हैं। और लैक ऑफ डिस्क्लोजर्स की वजह से जो है वो मटेरियल में स्टेटमेंट हो सकती हैं, जो भी ऊपर मैटर्स हो रहे हैं वो सब मिलके ये परवेसिव इम्पैक्ट डालेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और जिसकी वजह से एडवर्स ओपिनियन भी की भी नौबत आ सकती है अगर ऑडिटर ये कंसीडर करता है कि इसका इन इश्यूज का जो इम्पैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो पूरा ही मिसलीडिंग होगा। तो जो भी डिपेंड करता है कि जो भी ओपिनियन दिया जाता है क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन पैराग्राफ जो है ओपिनियन पैराग्राफ में के नीचे देना पड़ेगा, जो कि क्वांटिफाई करे, किस तरह पता चलेगा क्वांटिफाई करने के बाद में स्टेटमेंट्स को। ठीक है, सो ये था सोल्यूशन इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का। आई होप क्लियर होगा। फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।